Swaroop, we are starting, right? Yes, sir. Okay. The live streaming has started, so we can start. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Ashutosh Acharya, Assistant Professor, Sai LNCP. Welcome you all to this E-Khel Pathshala Physical Education and Community Coaching Program Foundation Level course. Ladies and gentlemen, today being the first session of day 17 of this program, amongst us we have a very eminent speaker. He is none other than Dr. Manoj Kumar Patel, sir. And the speaker for this session will be delivering talk on the topics sports medicine, prevention of injury, and primary care. Ladies and gentlemen, to say few of achievements of our eminent speaker, Sir is a medical doctor. He has done his MBBS from Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha, Maharashtra. He also has diploma in orthopedics from Maharashtra, DNB orthopedics from Lilavati Hospital and Research Center, Mumbai. Sir has also achieved many fellowships, received many fellowships. He was a fellow for hip and knee arthroplasty in Germany, fellow in knee arthroscopy and reconstructive surgery from South Korea. He also has membership of Indian Orthopedic Association Delhi, Orthopedic Association Bombay, Orthopedic Society, AO Trauma Asia Pacific Orthopedic Association SICOT. And so far as sir's research contribution is concerned, to name a few of his eminent research topic, one is he has published a research work in a prospective study of clinical and functional outcome of total knee arthroplasty using knee society score in tertiary care center. So, ladies and gentlemen, I consider this as a proud privilege to welcome Dr. Manoj Kumar Patel to this occasion. Sir, on behalf of Sports Authority of India, Khelo India, and Sai LNCP Thiruvananthapuram, I welcome you to this program and I hand over this session to you. Sir, please. Thank you, Dr. Ashutosh, for your kind words. Good morning, everyone. Namaskar, sabko. Today, I'm going to discuss about the prevention of injury and the primary care. As all of you are in very close contact with the athlete, आप सब लोगों का contact जो athlete से first level पे होता है, so basic हमें समझना है कि कैसे हम injury को prevent करें, and in case अगर injury होती भी है, तो हम उसमें primary care क्या-क्या provide कर सकते हैं, इससे related आज हम discuss करेंगे. So first हम start करते हैं कि how to define sports injury. What is sports injury? In simple terms, injuries that occur in the athletic activity, they can result from either acute trauma or from the overuse of any particular body part. Simple तरीके से आप कर सकते हैं कि sports injury को हम define कर सकते हैं कि कोई भी injury किसी athletic activity के दौरान या किसी competition में participate होने के दौरान लगी चोट या किसी भी बॉडी पार्ट की बार-बार इंजर्ड यानी क्रोनिक इंजरी होने की वजह से जो इंजरी है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं. The operational definition was given by Professor Jung et al. He defined the sports injury as a new or recurring musculoskeletal complaint or concussion occur during competition or training which require medical attention, and it is regardless of the time lost from the competition and training. So operational definition प्रोफेसर जंग ने इस फॉर्म में दिया है, कोई भी एक नई इंजरी या बार बार होने वाला इंजरी जिसकी वजह से एथलीट को कंप्लेन हो, मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेन हो या कंकशन या हेड इंजरी हो किसी इवेंट के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें एथलीट को मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो, और इसका कोई भी रिलेशन उसके टाइम लॉस से नहीं है, चाहे अगर कंपटीशन के दौरान हो या ट्रेनिंग के दौरान हो. सो जो प्रोफेसर जंग ने ये ऑपरेशनल डेफिनेशन दिया था. नाउ वी आर कमिंग टू बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द वेरियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी हैव? द फर्स्ट बेसिक वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक पैथोलॉजी ऑफ इंजरी. हमें किसी भी इंजरी का बेसिक पैथोलॉजी समझना बहुत जरूरी है. उसके साथ ही मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस मूवमेंट से और किस ऑकवर्ड मूवमेंट से कोई भी इंजरी होती है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है.
नेक्स्ट कम्स इज ट्रायल्स। अगर एथलीट को इंजरी हो जाती है ऑन फील्ड या ट्रेनिंग के दौरान, तो हम उसको ट्रायल्स कैसे करते हैं, हम उसको सेग्रीगेट कैसे करते हैं, हम उसको फर्स्ट केयर कैसे देते हैं। हमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी समझने की जरूरत है कि व्हाट आर द वेरियस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ताकि अगर इन केस आप फील्ड ऑफ प्ले में हैं या ट्रेनिंग के दौरान समथिंग कुछ अनइवेंटफुल होता है, तो हाउ टू प्रोवाइड द बेसिक मैनेजमेंट। Simultaneously we have to learn about the what are the things we have to basically do and don'ts. So हमें ये भी समझना जरूरी है कि इंजरी के दौरान या पश्चात हमें कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। Beside that we have to understand the referral needs. ये चीज आपको भी समझना जरूरी है कि किस परिस्थिति में या कौन सी कंडीशन में या इंजरी होने के बाद कौन सी कंडीशन में एथलीट को अर्जेंट रेफरल की जरूरत है, या कौन सी चीजें या कौन सी इंजरी आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, इसको समझना भी जरूरी है। Nowadays, because of increase in the competitiveness and speed has resulted in increase in the incidence of sports injury. आज के समय में नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा होने की वजह से और मल्टीपल पार्टिसिपेशन होने की वजह से भी जो स्पोर्ट्स इंजरी का इंसिडेंस है काफी ज्यादा बढ़ गया है। Coming to the risk factor for sports injury. So mainly risk factors are divided into two groups, the intrinsic factor and the extrinsic factor. Intrinsic का simple language में हम उसको आंतरिक बोलते हैं and extrinsic is बाहरी factors. So आंतरिक factors means the factors which are related with the or inherent with the athletes, जो athletes के साथ होते हैं. The extrinsic factors, all other factors which are affecting externally on the human body. जो other factors जो human body पे externally work करते हैं, that is known as extrinsic factors. So one by one हम सारे factors के बारे में समझना करेंगे. So intrinsic factors is further classified, sub-classified into two categories, the non-modifiable and the modifiable factors. So non-modifiable factors like age, gender. अगर एज ज्यादा है तो चांसेस ऑफ इंजरी इज मोर एज कंपेयर टू यंगर एज. जेंडर सिमिलरली फीमेल्स में आपको इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल्स. Ethnicity and genetics also plays role in etiology of the sports injury. Similarly, the modifiable factors like muscle strength, power, flexibility, skill level, and health of the athlete also has contributory role in the etiology of the sports injury. अगर किसी एथलीट का मसल स्ट्रेंथ या पावर ज्यादा है तो चांसेस ऑफ इंजरी कम हो जाएगी. अगर एथलीट का फ्लेक्सिबिलिटी लेवल या उसका स्किल लेवल ज्यादा है सो चांसेस ऑफ इंजरी काफी हद तक कम हो जाता है. अगर कोई एथलीट का हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. What are the various extrinsic factors? जो बाहरी factors के बारे में है उसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है. These are various factors I have enlisted which are like extrinsic factors. तो most common one is the training errors. Training कोई भी इवेंट में ट्रेनिंग के दौरान जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उसकी वजह से भी स्पोर्ट्स इंजरी में इंसिडेंट्स में इंक्रीज होता है. अगर कोई एथलीट एक्सेसिव लोड अपनी बॉडी पे डालता है सो उसकी वजह से भी चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाता है. इफ दे आर यूजिंग पुअर इक्विपमेंट लाइक worn shoes, potty rackets, that will also increase the incidence of the sports injury. So हमें इसके बारे में भी प्रॉपर ध्यान देना है कि there should be proper equipment and suitable equipment होना चाहिए to prevent the sports injury. The various environmental malcondition like humid condition, harsh weather also plays role in the etiology of the sports injury. So इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है. Sometime because of the violent play where rules are not being followed will also lead to the increase in incidence of the sports injury. After these, we are coming on the what are the basic causes of the sports injury. कौन से कारण हैं जिसकी वजह से sports injury होता है. The first and foremost common cause is the improper or poor training practice. सबसे पहला कारण है जो हमारा प्रॉपर तरीके से जो ट्रेनिंग है या गलत तरीके से ट्रेनिंग होना है उसकी वजह से
स्पोर्ट्स इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. Second thing is the wearing improper sporting gear. Third is being in poor health. अगर कोई एथलीट प्रॉपर और सुटेबल स्पोर्टिंग गियर नहीं यूज करता है तब भी इन दैट केस ऑल्सो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर एथलीट का हेल्थ इज नॉट इन प्रॉपर शेप, if an athlete is suffering from some injury or illness and still he goes for the training or practice, chances of getting injured is high. If there is an improper warm-up or stretching practice before event or exercise, that will also increase the chances of injury. Later on we are going to discuss about the what is warm-up and stretching exercise, उसके फायदे क्या हैं and हम उसको कैसे follow up करें. So coming to common sports injuries, what are the various common sports injury we are looking at day to day? So सबसे common sports injuries में आपको sprain and strains हैं, just like pull out of the muscles and ligaments. Sprains and strains को आप divide कर सकते हैं mild, moderate, severe, depend on the intensity of injury. Sprain and strain normally during active exercise के time, training के समय या event के समय में भी हो सकता है. Joint injuries like knee joint injury, which includes anterior cruciate ligament injury and meniscus injury. Similarly, chances of shoulder injuries are also high. So, like in swimmers, there are chances of shoulder injury. In running, high velocity sports like hockey, football, cricket, chances of getting injured is very high, and the major joints like knee, ankle are mainly affected. Muscle injury are also common. There might be acute incidents or because of the chronic irritation that will also cause the sports injury. Subluxation and dislocations are also there, like shoulder dislocation and subluxation of any joint like elbow or ankle. There are various fractures like fractures in the extremity, hand and foot. There is some cases where Achilles tendon injury has been reported, or there is a chronic pathology of the tendo-Achilles or plantar fascia. Sometimes athlete may present as a pain along with the shin bone. So these are the very common presentation of athletes in sports. Now coming to the factors which are playing very important role in the prevention of sports injury. So I have listed various factors which plays very important role in prevention of the sports injury. The first and foremost one is the warm-up. Second is stretching. Third is the role of taping and bracing. And the fourth one is the role of protective equipments. Fifth is the role of suitable equipments. Sixth is environmental factors also plays important role in prevention of the sports injury. There is a role of proper training. Simultaneously, psychology and nutrition also plays a very important role in prevention of the sports injury. One by one, we are going to describe about everything. So coming with the warm-up. What is warm-up? Basically, warm-up is a simple exercise and it is done prior to the sports. It helps prepare your body for aerobic activity. Generally, warm-up gradually increases your cardiovascular pace by raising your internal body temperature and also increasing blood flow to your muscles. The warm-up may also help reduce muscle soreness and also it decreases the chances or risk of injury. Warm-up के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है because prevention में इसका सबसे ज्यादा रोल है. Warm-up हमें किसी भी इवेंट के स्टार्ट होने या ट्रेनिंग से पहले करना है. ये आपकी बॉडी को एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करता है. अगर आप प्रॉपर वार्म अप कर देते हैं तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हृदय वाला सिस्टम है उसको गति को बढ़ा देता है जिससे आपका आंतरिक जो शरीर का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है एंड आपकी मसल्स में जो ब्लड का फ्लो है बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. वार्म अप आपके मसल का जो सोरनेस होता है उसको भी कम करता है एंड साइमल्टेनियसली आपके इंजरी के रिस्क को भी काफी हद तक कम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू वार्म अप. सो इन जनरली वार्म अप इज बाय फोकसिंग first on the large group of muscles such as your hamstrings,
then can do exercise more specific to that particular sport or activity if necessary. It begins by doing the activity and movement pattern of your chosen exercise, but at a slow pace that gradually increases its speed and intensity. This is called as a dynamic warm-up. A warm-up may produce mild sweating, but generally it would not leave you fatigued. Warm-up में हम large group of muscles पे focus करते हैं. First large group of muscles के exercise को perform करते हैं like hamstring, quadriceps, and then gradually हम small group of muscles पे focus करते हैं. Sport specific जहाँ जिस भी स्पोर्ट्स में मसल का स्पेसिफिक रोल है उसके स्पेसिफिक हम एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं. इनिशियली शुरुआत में जो ये है हम एक्सरसाइज को एक पर्टिकुलर पैटर्न में करते हैं, वेरी स्लो, काफी स्लो स्पीड से करते हैं एंड ग्रेजुअली हम धीरे धीरे स्पीड एंड इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं. इसको हम डायनामिक वार्म अप बोलते हैं. वार्म अप के दौरान आपको हल्की स्वेटिंग हो सकती है, बट जनरली वार्म अप की वजह से कोई फटीग या थकावट वगैरह महसूस नहीं होगी. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल इनलिस्ट किया है हाउ टू डू वार्म अप. लाइक अगर सपोज कोई एथलीट ब्रिस्क वॉक करता है तो उसके लिए वार्म अप हम कैसे करेंगे. सो फॉर ब्रिस्क वॉक athlete should walk slowly for 5 to 10 minutes. Slow walking is a warm-up process for the brisk walking. Similarly, for the running, the warm-up is in the form of brisk walking for 5 to 10 minutes. For swimming, start swimming very slowly at first and then pick up the tempo as you are able to. So these are the few examples. किसी भी इवेंट को आपको अगर तेज गति से चलना है, so warm-up धीरे धीरे स्टार्ट करें, स्लोली चलें फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन ग्रेजुअली पेस बढ़ाएं. स्विमिंग में ऑल्सो स्टार्ट स्विमिंग स्लोली, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें एंड एज योर टेम्पो इज पिकिंग अप यू कैन इंक्रीज द स्पीड. द सेकेंड फैक्टर विच comes having role in the prevention of sports injury is the stretching. स्ट्रेचिंग के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है. इसका प्रिंसिपल होता है सिंपल, टू बी इफेक्टिव होने के लिए it should be done slowly, gently and frequently. So what do you understand by slowly, gently and frequently? Slowly simply means the muscle being stretched must be moved slowly so that you can easily be aware of the tension in the muscle even when it is quite light. Slowly means आपको मसल, जो भी मसल को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसको बहुत धीरे से मूव करना है so that the मसल के टेंशन को आप फील कर सकें and मसल का टेंशन बहुत ज्यादा नहीं हो. Gently means when stretching, the tension in the muscle is mild enough that if the position is held for 20 to 30 seconds, tightness should disappear. If it has not, then the amount of tension is too much. So you need to relax the muscle and then repeat the exercise. Gently means simple और सरल भाषा में हम बोलते हैं कि मसल का टेंशन माइल्ड होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए. आप कोई भी पोजीशन जिसमें हेल्ड करते हैं अपने मसल को, वो 20 से 30 सेकंड तक अगर आप उस पोजीशन में रहें तो आपकी मसल का टाइटनेस समाप्त हो जाना चाहिए. अगर 20 से 30 सेकंड के दौरान आपके मसल का टाइटनेस समाप्त नहीं होता है तो आपका मसल का टेंशन ज्यादा है. इन दैट केस आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है. दैट रिलैक्स दैट मसल एंड देन अगेन रिपीट द एक्सरसाइज यूजिंग लेस टेंशन. सो gentleness is also a part of the stretching. The last one is the frequently. So किसी भी stretching को effective होने के लिए हमें frequency पे ध्यान देना है. अगर आपकी stretching को effective बनाना है so हमें दिन में several times, multiple times stretching को attempt करना है and in multiple sets, like set of 10 आप कर सकते हैं, पूरे दिन में 3 या 4 sets में कर सकते हैं. So exercise should not be done in a single set, should be done in multiple sets and over the period of time or several times a day कर सकते हैं. Stretching का क्या रोल है, ये इंजरी को कैसे प्रिवेंट करता है, how it prevents the injury. So stretching increases the flexibility of muscles attained through the stretching.
It may decrease the musculotendinous injury and elevate the muscle soreness. It also improves the range of movement of the joint and also enables the muscle to work most effectively. It returns normal neuromuscular balance between the muscle group, and also it reduces the compression on the joint surface. स्ट्रेचिंग सिंपली आपके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे आपके मसल एंड टेंडन का जो जंक्शन है उस पे दबाव कम हो जाता है एंड आपके मसल का जो फटीग या सोरनेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है. स्ट्रेचिंग जो है आपकी जोड़ का रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ा देता है एंड आपके मसल्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है. ये आपके न्यूरोमस्कुलर बैलेंस को भी मेंटेन करता है बिटवीन टू मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स. ये आपकी जो जोड़ के सरफेसेस हैं उस पे भी लोड को काफी हद तक कम करता है. There are three types of stretching. One is static stretching, second is dynamic stretching, and the third one is the pre-contraction stretching, that is proprioceptive neuromuscular facilitating stretching. I am not going in much detail, just aware about the terms stretching and also dynamic. What are the various contraindication? कौन सी कंडीशन में हम स्ट्रेचिंग को अवॉइड करते हैं, जहां हम करने से रोकते हैं, हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है और वो उस हीलिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में है, तो एट दैट Participants, please be online. We were trying to contact our expert. Maybe we have lost him online. Yeah, he is back. Hello, sir. Manoj, sir. Manoj, sir, are you there? Sir, you are on mute. Swaroop, are you there, Swaroop? Yes, sir. Yeah, please contact Dr. Sir, Manoj. I am calling, sir. I am calling. Okay, okay, please call. Participants, please be online. We are trying to get the connection back. Manoj, sir, are you there?
Swaroop? Sir, I contacted him. The problem was with his connectivity. That's also. Okay, I think sir is back. Yes, sir. Now I'm audible. Yes, sir, you are audible. I'm sir. audible now. Yes, yes, sir. Okay, so You can resume. I'm continuing from the slide 17. Okay. That's fine. That's fine. Sorry for the interruption. There is some issue in the internet. Okay, sir, no problem. We can resume, sir. So regarding stretching, so how it prevents the sports injury or how it decreases the incidence of the injury. The stretching is mainly going to increase the flexibility and it will decrease the musculotendinous injury or also alleviate the muscle soreness. It also improves the range of motion of the joint and enable muscle to work in most coordinated and effective manner. It returns the normal neuromuscular balance between the muscle groups, also reduces the compression on the joint surface. So stretching की वजह से आप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन जो है उस पर लोड कम हो जाता है एंड मसल का सोरनेस कम हो जाता है. स्ट्रेचिंग की वजह से जो जोड़ का किसी भी ज्वाइंट का, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट और एनी अदर ज्वाइंट का रेंज ऑफ मूवमेंट जो होता है काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है एंड ऑल द मसल्स रिलेटेड टू द जॉइंट्स आर वर्किंग इन वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव मैनर. जो न्यूरोमस्कुलर बैलेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स हैं वो ऑल्सो इंप्रूव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज. बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग जॉइंट सर्फेसेस पे कंप्रेशन एंड लोड भी रिड्यूस हो जाता है. So stretching mainly 3 types का होता है, categorized as a static stretching, dynamic stretching and pre-contraction stretching. So static and dynamic I have already explained to you. There is nothing much about the pre-contraction stretching. Just remember the 3 types: static, dynamic and pre-contraction stretching. What are the various contraindications of the stretching? हम किस कंडीशन में स्ट्रेचिंग को अवॉइड कर सकते हैं एंड जहां हमें स्ट्रेचिंग नहीं करना है. तो वन ऑफ द कंडीशन इज जॉइंट मोशन लिमिटेड बाय द बोनी ब्लॉक्स. इन केस जहां आपकी जॉइंट में कोई बोनी डिफॉर्मिटी है या फॉर्मेशन ऑफ कोई बोनी ब्लॉक है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड है आपका, इन दैट कंडीशन हमें स्ट्रेचिंग अवॉइड करना है. Second condition is after fracture and before bony healing is complete. In case of fracture or during the period of the healing of the bone, somewhere around 2 to 3 months, हमें stretching को avoid करना है because stretching will disturb the normal healing mechanism. In cases of acute inflammatory condition or infectious condition, also we have to avoid the stretching, because that will increase the chances, increase the inflammatory part, or there might be athlete has pain or swelling or increase in the severity of the infectious symptom. In cases of disruption of the soft tissue healing, also we have to avoid the stretching. In cases where athlete is having sharp acute pain and with joint movement or muscle elongation, if pain is there in that condition, also we have to avoid the stretching. In cases of hematoma or any soft tissue injury or any particular joint where there is a hypermobility occurs, in that condition also we have to avoid the stretching. किसी भी चोट की वजह से अगर कहीं ब्लड का कलेक्शन हो गया है, जमाव हो गया है, जिसको हम हेमाटोमा बोलते हैं, या किसी मांसपेशी का चोट है, या कुछ एक कंडीशन में कुछ एक जोड़ जो होते हैं हाइपर मोबाइल होते हैं जिनका रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होता है, इन दैट कंडीशन ऐसी परिस्थिति में हमें स्ट्रेचिंग को अवॉइड करना है. एथलीट को जब किसी कंडीशन में एकदम अचानक से शार्प और एक्यूट पेन होता है, आइदर नो इन मसल और विद द जॉइंट मूवमेंट, अगर जोड़ के मोड़ने में अगर पेन होता है, तो इन दैट कंडीशन आल्सो वी हैव टू अवॉइड द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज. The third component which helps in prevention of the sports injury is the role of taping and the bracing. The tapes and braces are mainly used as adjunct to sports protective equipments.
helps in treatment and also helps in rehabilitation of any injury. It should not take place of the appropriate diagnostic, treatment, and rehabilitation of injury. There is a role in prevention, treatment, rehab, and return to play decision. टेप एंड ब्रेसेस के बारे में आप सब लोगों को पता है, ये एज ए एडजंक्ट की तरह यूज होते हैं, एक तरीके से आपको मदद करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ ये हेल्प करते हैं आपके इंजरी प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं, एथलीट के रिहैबिलिटेशन में भी ये काफी हद तक हेल्प करते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखें, ये चीजें कभी भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का स्पेस नहीं ले सकती हैं। सो टेपिंग एंड ब्रेसिंग एज ए वर्क्स एज एडजंक्ट बट नेवर एज ए प्राइमरी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मॉडलिटी। टेपिंग एंड ब्रेसिंग का रोल आपके प्रिवेंशन में भी है, इंजरी के ट्रीटमेंट में भी है, एथलीट के रिहैबिलिटेशन में एंड अर्ली रिटर्न टू प्ले डिसीजन में भी टेपिंग एंड ब्रेसिंग का काफी हद तक रोल है। Prevention, it aids in stabilization. It also supports and protection of the uninjured or fully rehabilitated joint and soft tissue. While in treatment, it minimizes the pain and swelling in acute phase. Acute phase, it aids in unloading the painful structure and provides the support to unstable joints. While rehabilitation, it aids in early mobilization, muscle imbalances, neural control, proprioception, and protecting the healing injury. जहां हम इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, वहां पे ये टेप एंड ब्रेस आपके स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये आपके ज्वाइंट सर्फेसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड कोई भी अगर इंजर्ड या फुली रिहैबिलिटेटेड ज्वाइंट या सॉफ्ट टिश्यू है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फर्दर इंजरी। इन केसेस ऑफ ट्रीटमेंट, जहां हम इलाज के बारे में बात करें, वहां पे टेप एंड ब्रेस जो होते हैं आपके सिम्टम जैसे पेन एंड स्वेलिंग हो चोट के दौरान, उसको काफी हद तक कम कर देते हैं। ये आपका जो वेट बेयरिंग होता है या जो भी पेनफुल स्ट्रक्चर है उसको अनलोड करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो अनस्टेबल ज्वाइंट, जो जोड़ अनस्टेबल है उसको भी सपोर्ट में हेल्प करते हैं। सिमिलरली दे हैव रोल इन रिहैबिलिटेशन। विद द हेल्प ऑफ टेप एंड ब्रेस हम अर्ली मोबिलाइजेशन अटेन कर सकते हैं, हम मसल का बैलेंस काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं, हम न्यूरल कंट्रोल को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोप्रायोसेप्शन को बढ़ा सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली जो हीलिंग इंजरीज हैं, जो इंजरीज हीलिंग स्टेज में हैं, उसको फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टेपिंग एंड ब्रेसिंग के लिए आपको कुछ चीजों की केयर लेने की आवश्यकता है, जैसे स्किन का केयर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्किन शुड बी सेव, हेयर जो होते हैं आपके प्रॉपर सेव होने चाहिए, ये आपको एडहेजन में हेल्प करता है। अगर आप स्किन सेव नहीं करते हैं तो जो टेप का एडहेजन टू स्किन इज नॉट प्रॉपर, ऑल्सो इट विल इंक्रीज द इरिटेशन एंड रेसिड्यू जो होता है टेप का उसका बिल्डअप बढ़ जाता है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट हेयर शुड बी सेव्ड। We have to apply the taping base, like आप टिंचर बेंजोइन यूज कर सकते हैं। इसका रोल होता है ये आपके टेप जो सरफेस जहां आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में जो एडेजन होता है उसको इंक्रीज करता है। ऑल्सो इट वर्क्स लाइक ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी वर्क करता है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर दी अंडर रैप्स यूज कर सकते हैं, लाइक थिन पॉलिस्टर यूरेथ्रिन का फोम होता है। This will also prevent from the skin problems and it will increase the athlete's comfort. We can use the lubricant to prevent the possible use of irritation. After removal of the tape and brace, just wash it thoroughly and simply you can use the lubricant to soothe it. There should be appropriate method of the removal of the tape. So you have to use the scissor or cutter with a blunt tip. You have to teach the athlete to appropriate removal technique, कैसे निकालना है, how to clean the skin surface to remove the tape residue. After removal of the tape,
कैसे स्किन को क्लीन करना है, ड्राई करना है, वहां से जो टेप के रेसिड्यू हैं उनको भी हटाना है। और अगर कोई भी इरिटेशन होता है स्किन का या कोई भी उंड बनता है तो प्रॉम्प्टली उसको ट्रीट करना है। अगर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो मेडिकल इंटरवेंशन लेना है। ऑल्सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द एलर्जिक रिएक्शन टू द टेप मटेरियल। सो आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंडीशन में टेप मटेरियल से एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। सो आपको अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो इमीडिएटली यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिमूव द टेप। ऑल्सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव टेप्स। Now comes the role of the or principle of the bracing. The bracing material should be functional during the sport and daily activities. It should be comfortable, lightweight, and moldable brace. It will enhance the functionality if the brace is comfortable, lightweight, and moldable. It should fit appropriately and be adjusted as swelling improves and activity progresses. Braces may migrate during the activity. Tape, straps, undergarments may be used to decrease the unwanted migration. Brace should be evaluated over the time to ensure the appropriate function and assess the need of the part replacement. The principle of bracing जो होता है हमारा, the brace should be आपका comfortable होना चाहिए, हल्का होना चाहिए and moldable होना चाहिए according to that place. अगर आप ankle brace यूज करते हैं तो उसके according वो moldable होना चाहिए। ब्रेस आपका एप्रोप्रिएटली बराबर फिट होना चाहिए एंड आपको ब्रेस में स्वेलिंग को कम ज्यादा होने के लिए जगह होना चाहिए। बिकॉज विद एक्टिविटी स्वेलिंग बढ़ता है एंड अगर आप रेस्ट करते हैं तो स्वेलिंग घटता है। तो ब्रेस शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट फिट होना चाहिए जहां आपका स्वेलिंग के लिए स्पेस हो। एक्टिविटी के दौरान या किसी भी परिस्थिति में ब्रेस कभी मूव हो जाते हैं अपने प्लेस से। सो आप उनको सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप, स्ट्रैप यूज कर सकते हैं या कोई अंडरगारमेंट यूज कर सकते हैं टू डिक्रीज, टू उसको अंडर माइग्रेशन को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड समय के साथ हर ब्रेस का इवेल्युएशन जरूरी है टू चेक कि ब्रेस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं एंड उसको रिप्लेसमेंट या उसके किसी पार्ट को रिप्लेस करने की आवश्यकता तो नहीं है। Similarly have a role of the protective and suitable equipments. So आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा रोल है स्पोर्ट्स इंजरी के प्रिवेंशन में। ये इंप्रूव करता है सेफ्टी ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल्सो ये इंजरी का रिस्क कम करता है एंड एथलीट के वेलबींग में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स डिसिप्लिन देयर आर वेरियस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हेलमेट्स हैं, फेस शील्ड है, नी पैड, सिन पैड, shoulder pads, wrist guard, all these are examples of the protective equipments. The proper and appropriate use of the protective equipment also reduces the incidence of sports injury. Next comes the role of the suitable equipments. The sports specific suitable equipment should be used for athlete to prevent the incidence of injury. So आपका जो भी इक्विपमेंट होना चाहिए वो दैट पर्टिकुलर उसी स्पोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए एंड उस एथलीट के स्पेसिफिक होना चाहिए बिकॉज ऑफ द वेरिएशन एंड चेंज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एथलीट। किसी का वेट ज्यादा है, किसी का आपका हाइट ज्यादा है, तो दैट शुड बी इक्विपमेंट शुड बी एथलीट स्पेसिफिक एंड देन स्पोर्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। Any defective equipment can lead to the or increase the incidence of the sports injury. So be aware कि आपको proper instrument और equipments होने चाहिए and should be suitable equipments होने चाहिए। Next comes is the role of the environmental factors. There are various environmental factors plays very important role in prevention of the sports injury. We have to take care of that thing. The physical environmental risk factors are like weather, air quality, the surface where athletes are playing, the presence of any doctor or sports medicine professional, presence of physiotherapist is there or not. So various physical factors हैं जो आपकी इंजरी रिस्क को डिटरमाइन करते हैं। अगर वेदर ठीक नहीं है, हार्श ह्यूमिड वेदर है, सो चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है या सरफेस जिसपे एथलीट ट्रेनिंग कर रहा है वो अगर प्रॉपर नहीं है, डिफेक्टिव है, तो चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। अगर आपके यहाँ फिजियो
थेरापिस्ट या कोई डॉक्टर अवेलेबल हैं, सो अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन पॉसिबल है, दे कैन एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू प्रिवेंट द इंजरी। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से भी स्पोर्ट्स इंजरी का इंसिडेंस बढ़ जाता है। The social environmental factors like parents, teammates, coaches, media and policy decision also plays very important role in prevention of the sports injury. घर से दबाव, टीममेट्स की वजह से दबाव, या कोचेस कभी अनड्यू प्रेशराइज करते हैं किसी इवेंट के लिए because of the some attention in the media and might be because of some selection and all these things, policy legislates that the athletes भी over exertion करते हैं and that will also lead to the sports injury. So these factors also plays very important role in prevention of the sports injury. They're in need of the proper training. The sports specific training should be given to improve the performance of athlete. Training must be individualized as per the skill, power, strength and tolerance of the athlete. Adequate rest should be given between the competition. So किसी भी एथलीट के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा रोल है उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। ट्रेनिंग शुड बी, कोई भी ट्रेनिंग आप अगर प्रोवाइड करते हैं सो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एथलीट के स्किल के हिसाब से, उसकी क्षमता, उसके पावर एंड उसके टॉलरेंस के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ऑल्सो देयर इज अ रूल ऑफ एडिक्वेट रेस्ट। हमें दो ट्रेनिंग सेशन के बीच में एडिक्वेट रेस्ट देने की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक कि दे कैन गो फॉर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग over the prolonged period. So proper training also plays very important role. Beside that, there's a role of the psychology and nutrition also. Psychology, where the athletes who develop psychological skill like goal setting and relaxation techniques, they can handle the stress in much better way. They can reduce the chances of getting injured and the actual stress. So आजकल मनोविज्ञान का भी बहुत ज्यादा रोल है। जो एथलीट गोल ओरिएंटेड हैं एंड जिनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में पता है वो स्ट्रेस को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं एंड एक्चुअल स्ट्रेस जो होता है काफी हद तक कम हो जाता है। सो मनोविज्ञान का भी काफी रोल है। The athletes who have been injured often follow a simple 5-stage grief response process. This is given by the Hardy and Graves in 1990. The first stage is denial, anger, bargaining, depression, and acceptance and reorganization. These stages do not necessarily occur in the same order, and one can go back and forth between them. Some other psychological reactions to injury may include identity loss, fear, anxiety, lack of confidence, performance decrements, and the group processes with the sports team. So psychology में हार्डी एंड प्रोफेसर ग्रेस ने एक थ्योरी दिया था कि एथलीट्स हु हैज बीन इंजर्ड, जिनको इंजरी हो जाती है, वो एक 5 स्टेज के रिस्पॉन्स प्रोसेस से जाते हैं। इनिशियली वो डिनाई करते हैं, देन एंगर की तरफ गुस्से में प्रेजेंट करते हैं, आफ्टर दैट दे कैन बार्गेन लाइक यू नो आई कैन डू, द नेक्स्ट स्टेप इज डिप्रेशन एंड द फिफ्थ इज द एक्सेप्ट करना, उसको रीऑर्गेनाइज करना। सो मनोविज्ञान और साइकोलॉजी का भी काफी ज्यादा रोल है टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी एंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट इन स्पोर्ट्स। Similarly, there is a role of nutrition in prevention of the sports injury. So adequate and balanced diet are vital to ensure the athletic performance and recovery. Low dietary intake of carbohydrate and protein can significantly increase risk for exercise-related injury. A dehydrated joint is more susceptible to tears and injuries. Dehydration creates added stress on the body, including increased internal temperature, heart rate, sweat rate, early fatigue, and loss of balance and mental focus. Adequate amount of calcium and vitamin D every day helps develop and maintain these strong bones. So there is a role, adequate or balanced diet बहुत जरूरी है for proper function and performance of the athlete.
बैलेंस डाइट का रोल रिकवरी में भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी एथलीट का डायट्री इंटेक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिग्निफिकेंटली कम है तो भी इंजरी के रिस्क में और काफी ज्यादा बढ़ाव हो जाता है। अगर वाटर इनटेक कम है सो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, एंड डिहाइड्रेशन की वजह से मसल एंड जॉइंट्स आर मोर प्रोन टू इंजरी। साइमल्टेनियसली बॉडी पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर, हार्ट रेट, स्वेटिंग रेट सब कुछ बढ़ता है, थकावट ज्यादा होती है। कैल्शियम एंड विटामिन डी का रोल भी बहुत ज्यादा है टू मेंटेन आपका स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बोन एंड मसल। Essential fatty acids like omega-3 fatty acids are needed to make and repair cell membrane and good for the heart, a source of energy, lubricating joints and tissue and reducing the inflammation in the body. Similarly, there is a role of vitamin C and E, and vitamin E also helps in protecting organism and organs from the damage caused by the free radicals. So, essential fatty acid like omega-3 fatty acid जो होता है आपके टिश्यू के रिपेयर में काफी हेल्प करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड एथलीट्स के हार्ट के लिए गुड सोर्स है। ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स में भी, और टिश्यू के इन्फ्लामेशन को कम करने में भी मदद करता है। वैसे ही विटामिन सी और विटामिन ई का भी रोल है। विटामिन ये जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से प्रिवेंट करते हैं, जो फ्री रेडिकल हमारे शरीर में डैमेज पहुंच करते हैं उससे विटामिन सी एंड विटामिन ई हमें प्रिवेंट करते हैं। So after going through all these factors, now we are concluding what are the things and how to prevent sports injury. The first and foremost thing is develop a fitness plan that includes cardiovascular exercise, strength training, flexibility. This will help decrease the chances of injury. The second is alternate exercising different group of muscles and exercise every other day. The third is cool down properly after the exercise or sport. It should take 2 times as long as your warm up. So सभी फैक्टर्स जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरी, उसको समझने के बाद हमें ये एक पैटर्न पता है जिसमें हमें एक एथलीट के लिए फिटनेस प्लान बनाना है, जिसमें उसका कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, उसके स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग एंड उसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेनिंग को इंक्लूड करना है। ये उसके इंजरी के रिस्क को काफी कम करता है। साइमल्टेनियस हमको उनको अलग अलग ग्रुप के मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए भी प्रमोट करना है एंड सिखाना है। कूल डाउन आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग या इवेंट के बाद कूल डाउन भी प्रॉपर तरीके से करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि कूल डाउन का समय ऑलमोस्ट 2 गुना होता है वार्म अप के लिए। अगर आप वार्म अप 20 मिनट्स करते हैं तो इवेंट के बाद कूल डाउन का समय समवेयर अराउंड 35 to 40 minutes होना चाहिए। The other factors through which we can prevent these sports injury is stay hydrated, drink water to prevent dehydration, heat exhaustion, and heat stroke. Stretching exercises can improve the ability of muscles to contract and perform, reducing the risk of injury. Each stretch should start slowly until you reach a point of muscle tension. Stretching should not be painful. The aim is to hold each stretch for 20 seconds. Use the right equipment and gear and wear the proper shoes that provide support that may correct certain foot problems that will lead to injury. So hydration properly maintain no हो और हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के रोल आप सबको पता है, वो मसल्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। हमारा एम होना चाहिए कि एक स्ट्रेच होता है एटलीस्ट मिनिमम 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सके, जिसकी वजह से मसल का जो टेंशन है और सोरनेस है काफी हद तक कम हो जाता है। हमें प्रॉपर इक्विपमेंट स्पॉटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉट्स और सुटेबल इक्विपमेंट यूज करने हैं टू प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरी। Similarly, we have to learn the right technique to play the sports. So techniques का भी मेजर रोल है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक्स से आप अपने गेम में प्ले कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ इंजरी इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू अदर वन। There is a role of the proper rest. When athlete is tired
आपको प्रॉपर रेस्ट देना है, एक्सेसिव एक्सरसाइजेज उस टाइम पे हमें अवॉइड करना है जो एथलीट को टायर करते हैं या पेन को बढ़ाते हैं। सो रेस्ट का भी हमें प्रॉपर ध्यान देना है। ऑलवेज टेक योर टाइम ड्यूरिंग द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड गो थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन विद ईच रिपीटेशन। सो हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एथलीट जाता है सो उसका पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट होना चाहिए विद हर रिपीटेशन के साथ। If you do sustain a sports injury, make sure you participate in adequate rehabilitation before resuming strenuous exercise. अगर कोई भी एथलीट इंजर्ड हो जाता है, so there should be, he has to take the proper treatment, he has to go through the proper rehabilitation, then only rejoin the that particular sports. Otherwise, chances of injury is again. So now coming to primary care, we have finished the factors which are related with the prevention of the sports injury. Now coming the role of the primary care. Suppose some athlete has injured on field, so you are the first person who are in contact with the athlete, so you must be aware about the primary care. हम प्राथमिक उपचार जैसे सरल भाषा में बोलते हैं उसके बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए। So initially I'm using the red flag. Actually just I'm describing the few words like red flag injuries जहां आपको सचेत होने की आवश्यकता है। In cases of severe swelling कौन सी कंडीशन में हो सकता है? In cases of fracture हो, dislocation हो सकता है या sprain हो। In that condition athlete is having severe swelling, severe tenderness. Tenderness simply is a sign which you can elicit. एथलीट अपने सरल लैंग्वेज में उसको पेन बताता है। अगर आप उस पर्टिकुलर पार्ट को टच करते हैं, एथलीट को पेन होता है, तो दैट इज टेंडरनेस। तो आप सिंपली टेंडरनेस इलिसिट कर सकते हैं ऑन द फील्ड। टेंडरनेस इज a sign of the injury. It might be because of the fracture, dislocation or soft tissue injury. So आपको swelling के एस्पेक्ट भी पता होने चाहिए, टेंडरनेस भी पता होना चाहिए। Simultaneously, if there is any neurological involvement like sign of head injury or spine injury, so वो भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं एथलीट का न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा है, वो अपना हाथ उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है, इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या कोई रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। So neurological assessment should also be aware about that thing. Blunt trauma abdomen also is comes under the severe category because of this splenic injury. Spleen की इंजरी की होने की वजह से इंटरनल ब्लीड होता है जो आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, and that will be catastrophic. So must be aware about the, अगर चोट कहीं blunt trauma है, should be focus on early evaluation. Similarly, there is a incidence of chest injury like cardiac and pulmonary. All these are red flag injuries require immediate medical attention. How to do initial assessment of injury? अगर आप फील्ड ऑफ प्ले पे हैं, so how, कैसे आपको इनिशियल असेसमेंट करना है एंड कैसे आपको डिसाइड करना है कि एथलीट प्ले में कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू talk with the athlete. You have to observe, is there any visible swelling, deformity, tenderness है तो नहीं कहीं टच पे। You have to check the range of movement, whether movement painful है कि नहीं या कोई movement पूरा नहीं हो रहा है। Also, you have to look for the skill, whether the athlete is having pain or instability is there. फील्ड ऑफ प्ले पे अगर आपको एसेस करना है किसी प्लेयर को कि वो प्ले कंटिन्यू कर सकता है नहीं, तो आपको उससे बात करना है, आपको देखना है कि कहीं कोई विजिबल डिफॉर्मिटी या कोई सूजन तो नहीं आई हुई है। आप हाथ लगा के देख सकते हैं, अगर पेनफुल है दैट मींस टेंडर है। आप जोड़ को मूव करके देख सकते हैं, आपको रेंज पूरा है या नहीं है, एथलीट को कितना ज्यादा पेन है एंड कितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं ही कैन कंटिन्यू play or not. In case of severe injury, we have to go through the ABCDE protocol. ABCDE is a simple abbreviation. A means airway, B means breathing, C is circulation, D is disability, and E is exposure. So ABCD simply understand. First आपको देखना है कि airway जो पेटेंट है कि नहीं, एथलीट प्रॉपर तरीके से आप उसका नाक और मुंह खुला है कि नहीं जिसके वो सांस ले सके। सो पहली चीज हमें देखनी है कि एयर में पेटेंट है कि नहीं।
दूसरा ब्रीदिंग देखना है, एथलीट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो प्रॉपर तरीके से ले रहा है, सफिशिएंट है या नहीं। तीसरा हमें सर्कुलेशन देखना है, सर्कुलेशन सिंपली हम पल्स रेट से देख सकते हैं। सो चेक करना है हमें कि रेट स्टेबल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पल्स रेट नहीं मिल रही है। कैपिलरी रिफिल चेक करना है हमें, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर चेक करना है, स्किन का कलर देखना है कि कोई चेंजेस तो नहीं है। ABC अगर प्रॉपर है देन ओनली गो फॉर दी डिसेबिलिटी, देन हमको देखना है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं कोई इंजरी नहीं हुई है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, ये चेक करना है। एंड फाइनली लास्ट वन इज द एक्सपोजर। All these examination we have to conduct in a very short span like 20 to 30 seconds। ये वे हमें काफी जल्दी एसेस करना है। एक्सपोजर में हमें पूरा हेड टू टो असेसमेंट करना है, देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं, कहीं कोई फ्रैक्चर है या स्वेलिंग प्रेजेंट कर रहा है, डिसेबिलिटी, एवरीथिंग वी हैव टू लुक विद इन 20 to 30 seconds। What are the first principle of the management? So RISE similarly has abbreviation. R stands for the rest, I stands for the ice, C stands for the compression, and E stands for the elevation. So for primary care, there is a very important role of the RISE, like any sprain, strain, any small injury, this protocol is more than enough for the management part. Rest to that particular or injured affected part for next 2 to 3 days. Ice almost we have to use every 15 to 20 minutes over a period of time, and this should be repeated after every 2 to 3 hours. There is a role of compression. Compression is mainly to reduce the swelling, and simultaneously you have to elevate the limb above the level of the heart to increase the venous return. One by one, I'm going to explain about this. There is a role of this RISE protocol for first 24 to 70 hours, mainly immediately after the injury. The basic goal is to stabilize that affected part, control the amount of swelling to injured area and pain, and also prevent the further injury. These principles will reduce the pain, swelling to the affected area, and time required for the rehabilitation. जो हमारा राइस प्रोटोकॉल है, जनरली हम पहले फर्स्ट डे से थर्ड डे तक के लिए फॉलो करते हैं, एंड ये शुड बी फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर, चोट लगने के तुरंत बाद करते हैं। इसका बेसिक गोल है जो भी पार्ट इंजोर्ड हुआ उसको स्टेबलाइज करना है, हमें स्वेलिंग को कंट्रोल करना है एंड पेन को कम करना है, एंड फर्दर जो इंजरी है उसको बढ़ाना से रोकना है। अगर हम प्रॉपर दीज प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो पेन काफी हद तक कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाता है, एंड जो रिहैबिलिटेशन का जो हमारा टाइम है उसको काफी हद तक हम कट डाउन कर सकते हैं। So here comes the role of the stabilization and protection. After the injury, first step is the stabilization and protection of that particular affected area. It varies, it depends on the injured area. That may include bandage, sling, protective tape, and brace. The main purpose of application of these devices is to stabilize the affected part and prevent the further injury. स्टेबलाइजेशन में आप कोई भी मॉडलिटी यूज कर सकते हैं। आप स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ बैंडेज से कर सकते हैं, स्प्लिंट से कर सकते हैं, आप प्लास्टर लगा के स्टेबलाइज कर सकते हैं, या सिंपल स्लिंग बना के कर सकते हैं। वेरियस प्रोटेक्टिव टेप्स आते हैं या मार्केट में ब्रेसेस है रेडीमेड, उसके हेल्प से आप अफेक्टेड एरिया को स्टेबलाइज कर सकते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ इन सब डिवाइसेस को यूज करने का है कि आपका जो अफेक्टेड पार्ट है वो फर्दर जो इंजरी हो उसको काफी हद तक रोकता है। आइस, as already discussed, it should be applied 15 to 20 minutes at a time and should be repeated at a frequent interval like every 2 to 3 hours. Care must be taken for the hypersensitivity and allergy to the eyes. Skin sometimes may become red, blotchy, and raised due to direct contact with the eyes. If this thing happens, immediately remove the ice pack and rewarm the area. The आइस का जो हमारा रोल है मेनली ये वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, जो ब्लड सप्लाई है ब्लड्स को
जो ब्लड वेसल्स उनको श्रिंक करता है, काफी हद तक स्वेलिंग को कम करता है। आइस पैक हमें डायरेक्टली स्किन पे नहीं अप्लाई करना है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल कॉटन क्लॉथ आप रैप करके अप्लाई कर सकते हैं, एंड नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स। हर 2-3 घंटे पे इसको रिपीट करना है। दिस इज हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। आपको साइमल्टेनियसली ये भी ध्यान रखना है कि कुछ एथलीट्स में आइस से एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन रेड हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, एंड स्किन मार्जिन से रेज हो जाते हैं अगर डायरेक्ट आप आइस यूज करते हैं तो। अगर इस तरह की कुछ चीजें होती हैं सो आपको इमीडिएटली आइस पैक को हटाना है वहां से, उस एरिया को पूरा ड्राई रखना है, एंड rewarm करना है, either with the rubbing or any, you can use any. So next comes the role of the compression. Compression, they have many varieties, like most commonly used one is the elastic or ace bandage or crepe bandage. It works as a mechanical barrier to contain the swelling in the affected area. The elastic bandages having various sizes applied according to body parts from distal to proximal. सो कंप्रेशन आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोई भी इलास्टिक बैंडेज या क्रेप बैंडेज से। ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है जो आपके स्वेलिंग को रोकता है। दैट पर्टिकुलर इफेक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो स्वेलिंग को बढ़ने से रोकता है। इलास्टिक बैंडेजेस या एस बैंडेजेस अलग अलग साइजेस में आते हैं और अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमिटी, अपर लिम में है या लोअर लिम में, हाथ में लगाना है या पैर में लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप साइज चूज कर सकते हैं। और ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि ये जो बैंडेज है हमें अप्लाई करना होता है निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से में, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। तो जहां भी इंजरी है उसके निचले हिस्से से हमें ऊपर के हिस्से में लेके जाना है। देयर इज ए फिक्स पैटर्न, फिक्स स्केल पैटर्न में हम करते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर कंप्रेशन के लिए। Then why there is a need of the compression? Why you want to achieve compression? The basic concept of the compression is the external pressure which is provided by the compression. It reduces the fluid leakage and bleeding in tissue. Also protects and supports that area. So compression का basic purpose है जो भी fluid injured area से subcutaneous area में लीक होता है उसको रोकता है, एंड जो ब्लीडिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द वेसल्स उसको रोकता है। सेम टाइम ये आपको इंज्योर्ड एरिया को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। रोल ऑफ द एलिवेशन, द की इज टू एलिवेट द अफेक्टेड एरिया above his and heart level. For lower limb simply you can use the pillow, और for upper limb slings यूज कर सकते हैं, ब्रेस यूज कर सकते हैं। एलिवेशन ऑलवेज रिमेंबर आपके हार्ट हृदय के लेवल से ऊपर होना चाहिए। अगर पैर में चोट है, एंकल में या नी में इंजरी है, तो सिंपली 2 पिलो आप यूज कर सकते हैं, पिलो के ऊपर पैर रखते हैं। दैट कैन यूज एज ए एलिवेशन मॉडलिटी। एंड अपर लिम अगर हाथ में चोट है, कंधे में चोट है, तो आप सिंपल आर्म पाउच स्लिंग यूज कर सकते हैं, या आप कॉटन का स्लिंग आप बना सकते हैं, बैंडेज से भी सिंपल एक स्लिंग बना सकते हैं। These are the primary modality or primary care methods. In case of the any injury where severity is more, you must be aware about the referral needs. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंजरी आपके लेवल तक मैनेज होना है एंड कौन सी इंजरी में आपको हेल्प लेना है ऑफ डॉक्टर्स या रेफर करना हॉस्पिटल में। बिकॉज प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द better outcome and early rehabilitation. That constitutes all. Thank you from my side. Thank you so much, sir. Indeed, it was a beautiful presentation, and I'm sure that all our participants might have been benefited out of it. So, ladies and gentlemen, amongst us we have our beloved principal, Dr. G. Kishore sir, Principal Sai LNCP, and I request our principal, Dr. G. Kishore sir, to put his comments. Sir, please. Dr. Ashutosh, I think we have a question and answer session now, isn't it? Yes, sir, we have it. So I think I'll do it after that. Okay, sir. Thank you, sir.
Sir, we have many questions, but we will take a few questions here. Yeah. So, like, Please. first question is: are isometric loading exercises as effective as eccentric loading exercises for hamstring injury prevention? This question is asked by Mr. Dhananjay Roy. Sorry. Again, can you please repeat the question? So the question is: are isometric loading exercises are as effective as eccentric loading exercises for hamstring injury prevention? Yes, definitely. Isometric exercises are even in cases of injury, we can advising after certain days, after 3-4 days, we are advising for the continuing of the isometric exercises, and it's really effective. Okay, sir. Thank you. So the next question asked by Mr. Pawan Kumar. वो पूछना चाहते हैं कि खिलाड़ियों को जब मांसपेशियों में खिंचाव बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग. अगर बार बार खिंचाव हो रहा है सो रेस्ट की जरूरत है. हर खिलाड़ी के नीड के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि अगर किसी को लग रहा है कि बार बार हो रहा है सो क्यों हो रहा है. वी हैव टू लुक फॉर द रीजन. ट्रेनिंग में कहीं एरर है, या एथलीट इज प्रोन फॉर दैट, या टेक्निक इज प्रॉपर नहीं है. सम टाइम बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं. सो हमको 1 by 1 ईच फैक्टर्स रूल आउट करने हैं एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड. अगर लग रहा है जहां इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है सो मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट हम वहां हेल्प ले सकते हैं. अगर लग रहा है ट्रेनिंग एरर है तो वी हैव टू गो फॉर दैट. If rest is not adequate, then give proper rest to the athlete and gradually increase the training schedule. It's not like अगर problem create हो रही है बार बार, so training का जो schedule है we can modify according to the athlete. So in this way we can definitely reduce the incidence of. Okay, thank you, sir. We have another question asked by Mr. Syed Mohammad Gulam Raja. He's asking how to increase stretching ability in children of age 14 to 15. Stretching ability. Yes. So actually the thing is they have to start slowly. It's not like they have to, from day one they can increase it. Gradually they have to build up or increase the intensity of stretching. Initially, suppose for 10 seconds they are able to hold, so 10 seconds hold करके stretch करने के लिए करना है. If over a period of time, if they are doing repeatedly and stretching, अगर आप sets में करते हैं, 10 के sets में करते हैं, and they can be repeated after 2 or 3 or या दिन में अगर आप 4 या 5 बार भी 10 के sets में करते हैं, so initially for small intensity, then gradually increase the pace. अगर आपको लग रहा है कि 5 के sets में कर रहे हैं, then go for the, after 1 week we can go for the 7, then next week we can go for the 10. In this way, gradually we can go for the increase in the pace of the stretching things. But don't jump directly कि from day 1 we have to go for the 10 sets and should be in 4 or 5 divided times. So according to athlete, अगर athlete is compatible with 5 stretchings, so in a single sitting go for the 5 stretching. आप day में उसको 3-4 settings कर सकते हैं. Eventually once he is able to tolerate that thing, हम उसको increase कर सकते हैं. Okay, thank you, sir. There is another participant, Mr. Sanjay Chaudhary. He is asking, warming up or cool down का duration कितना होना चाहिए? Sir, it all depends on the duration. Ideally should be 20 to 30 minutes of the warm-up, and cool-up period should be double than the warm-up period. So suppose some athlete is going for some 20 minutes or 10 minutes, 20 or 30 minutes, so cool-down period should be almost double. So almost they have to go for 40 to 60 minutes. And it all depends on intensity of the training and the event also. If the training is very intense, so accordingly they have to adjust the duration of the warm up and the cool up. But ideally should be 20 to 30 minutes. And Okay. it should be done almost 30 minutes before the event. It should not like they can go earlier or they can go later on. So warm up should be done 20 to 30 minutes earlier from the start of the event and should be continued for 20 to 30 minutes like that. Okay, sir, there is another physical education teacher. He's asking if an athlete have muscle imbalances at major joints from his childhood,
Should the athlete completely halt training and start rehabilitation? Muscle imbalance. Yes. Actually, first we have assess which group of muscles there is a imbalance. Okay, whether it's a major and how much the activity is affected, whether that is affecting the range of movement, that will create instability, and accordingly we have to, because muscle imbalance normally is not very common in the athletes unless some athlete actually have mild cerebral palsy kind of things. So first there is a proper assessment and whether that muscle imbalance is affecting the range of movement or outcome of that particular athlete. Accordingly, we have to plan for the treatment aspect also. Okay, sir. We will take one more question और एक क्वेश्चन हम लेंगे सर. एक टीचर हैं मोहन कुमार राय, वो पूछना चाहते हैं सर, चोट लगने के बाद जो गांठ बन जाती है उसके लिए क्या करें? चोट लगने के बाद गांठ बन जाती है? जी जी. चोट लगने के बाद सर जो गांठ बन जाती है उसके लिए है, आपको उसके लिए वरी नहीं होना है, जो राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना है. चोट का इंटेंसिटी आपको पता करना है सर कि चोट सीवियर तो नहीं है. अगर सीवियर है तो डेफिनेटली सर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है. अगर सीवियर नहीं है, लग रहा है कैन बी मैनेजेबल एट होम और एट कम्युनिटी लेवल, सो राइस प्रोटोकॉल करना है सर. रेस्ट करना है, एलिवेशन एंड विद सिंपल. अगर मान लीजिए सम कंडीशन में बन जाता, हार्ड इंड्यूरेटेड, आपको मास की तरफ फील होता है, इवेंचुअली ओवर द टाइम इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे सबसाइड होता है वो अपने आप कम हो जाता है. अगर लगता है कि आफ्टर 2 to 3 वीक्स के बाद भी अगर गांठ जो बना हुआ है एंड सबसाइड नहीं हो रहा है, डेफिनेटली उसको हमें इमेजिंग की हेल्प से रूल आउट करना पड़ेगा कि वो ब्लड क्लॉट है या समथिंग डिफरेंट है. सो वेट फॉर 2 to 3 वीक्स. अगर एक्यूट है, अगर लग रहा है कि चोट लगने की वजह से है, तो वेट फॉर 2 to 3 वीक्स, कंटिन्यू योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आइस बैग, रेस्ट, इमोबिलाइजेशन. अगर 3 वीक्स के बाद भी सबसाइड नहीं हो रहा है, गांठ परसिस्टेंट है, डेफिनेटली रिक्वायर इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड या कोई अदर इमेज की हेल्प लेके आप उसको गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we have got many question and answers, so it is not possible to answer all the queries, but definitely we will try to get back to you on the questions that you have asked. So, ladies and gentlemen, now I invite our principal, Dr. G. Kishore sir, to put his comments. Sir, please. Thank you, Dr. Ashutosh. And at the very outset, I would like to appreciate the excellent session made by Dr. Manoj Kumar Patel, who is an expert in this field, highly qualified. You see, I think if you look in, I hope Dr. Ashutosh has given a proper introduction about Dr. Manoj Kumar Patel initially, isn't it? Yes, sir. I hope you have mentioned about his qualification. I think he is one of the having highest qualification now in the all over the country or even in the world. So because he is DNB, then also is a fellowship he has from Germany, Dresden, and so South Korea. He's the first D ortho, gold medalist from MUHS University, Indian Orthopedic Association member, Asia Pacific Orthopedic Association executive, and a lot of research studies. So he's a very thorough and expert, a highly competent, topmost doctor in this field who has deliberated. So I think it would have been of immense benefit. And the topic also is something which each and every one of us are being confronted with. There is no athlete or no person connected with sports, even as a youth or as a school or college going child or a baby or everyone is having with some injury or other in their life. So the injuries sort of complexity varies from depending upon how, where, what, when, and so on, which purpose and target. So it is very management of the injury, prevention of injury, and if it is occurred, the rehabilitation of injury. These are of prime importance. I am sure that there is no top athletes who has not been affected out of it. If you look into the past, even in the Indian sporting arena, many of our top-rated athletes, sports persons, their performance had been affected. Many of them has to, prematurely
cut short and prematurely they have now to end their sports career because of the sports injuries. Many of their ambitions, targets, life targets have been very, what you call mercilessly, or rather in a very sad way, had to be culminated with this injury. So it's very important that this knowledge of this, the topic, which has been, it should be something which each and every person, each and every teacher, physical education teacher and coach should know. ये जो जानकारी आपको मनोज कुमार पटेल साहब ने दिया है, डॉक्टर ने, तो वो ये सब सारे जितने आपका खेल शिक्षक है, हमारा शारीरिक शिक्षक है और हमारा कोचेस है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर खिलाड़ी या हर व्यक्ति हर को ये कभी अपनी जिंदगी में या अपने बचपन में या कभी कहीं भी इसको आपको सामना इसको करना पड़ता है, और इसको किस तरफ से मैनेज करेगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहतरीन आपका लिए इसकी जानकारी बहुत इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप खिलाड़ी हो तो आपका जो ट्रेनिंग गोल है इसमें ऊपर निर्धारित है आपका कितने आप अपने आप को सेफ रहते हैं। अगर आप नॉर्मल एथलीट, नॉर्मल स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग चाइल्ड हो तो भी आपको टू कीप सेफ, आपको हेल्थी रहना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू स्टे अलर्ट। आपने अलर्टनेस कितने है, आप कितने आप अपने आप को अलर्ट करते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए आप कितने अलर्ट हो जाते हैं वो आपके इसमें सबसे ज्यादा, आप हर बच्चों को बोलना है, आप यू हैव टू बी वॉचफुल एंड अलर्ट, एंड देयर आर मेनी ऑल द कंडीशंस, ऑल द द वे जो भी आपका जो फैक्टर्स है इसका आपको सामना करना पड़ता है और किस तरफ से इनका जो इंजुरीज आता है उसके बारे में भी डॉक्टर मनोज कुमार पाटिल साहब ने आपको बिल्कुल ठीक तरफ से बताया कि वार्म अप में किसका असर है, कूल डाउन में इसमें कितना ज्यादा असर है, रेस्ट का क्या असर है, इसके लिए कितना आपको रेस्ट लेना चाहिए। हर एक हम लोग तो कभी बार जो है भूल जाता है रेस्ट करने के बारे में, हम तो ट्रेनिंग करते हैं लेकिन रिकवरी भूल जाते हैं, रेस्ट करना भूल जाते हैं। रेस्ट करना जो है आपका, जितना आपका ट्रेनिंग है, जितना आपका उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपका रिकवरी और रेस्ट। रेस्ट जो है आपका स्लीप से आ जाता है, कितना नींद आपको मिल जाता है, 8 घंटे आपका बच्चा सो जाते हैं कि नहीं, और उनका पूरा रिकवरी, क्योंकि आपका जो रीबिल्ड करना है और रिकवरी रिपेयर करना है वो तो स्लीप में आपका रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट को कितने ठीक तरफ से आप अपने बच्चों को बता देते हैं। कई आजकल इतना लोग बच्चे इतना बिजी रखते हैं कि वो स्कूल का बावजूद भी जाके या टीवी के सामने बैठ जाता है या अपने मोबाइल पे खेल लेते हैं, और सोने के टाइम उनका ग्रोथ ही कम हो जाता है। इसके मतलब क्या है, उनका ग्रोथ में असर पड़ जाता है और इंजुरी ज्यादा, उसका रिपेयर नहीं होता, रिकवरी नहीं होने से आपका इंजुरी आने का फिर ज्यादा खिलाड़ी हो तो फिर और संभावना ज्यादा है। तो इसलिए आपको ये जानकारी बिल्कुल बच्चों को देना जरूरी है कि आप अपने बच्चों को कि सोने का, रेस्ट करने का, आराम करने का, रिकवर करने का कितना जरूरी है। इतना ये भी आपको जरूरी है कि आपका हाइड्रेशन है। कई बार पानी पीना भूल जाता है, या आजकल को कई जो बीमारियां हैं इसलिए ठीक साफ पानी हाइड्रेट करना और आपको कितना पानी का आपका शरीर में जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर का। तो ये सारे चीज और बाकी हर चीज के लिए हम डॉक्टर मनोज साहब ने बताया कि आपका कितने किस तरफ से राइट गियर करना है, स्पोर्ट्स वियर आप क्या कर लेते हैं, आपको मसल्स को किस तरफ से स्ट्रेंथन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज करना है, टेक्निक्स किस तरफ से प्रॉपरली यूज करना है, ब्रेक्स कैसे लेना है, प्ले सेफ करना है, और आप जिसको जब आप इंजर्ड है तो आपको खेलना नहीं चाहिए, और रूल ऑफ द गेम्स तो आपको देखना चाहिए, अपने आईज को प्रोटेक्ट करना है। आप देख लीजिए आपका सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्ट करने के ये है आपका आईज। अगर आपका आंख में बच्चों का कुछ हो जाता है फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार उसमें से बाहर आना। तो आई प्रोटेक्शन जो है ये तो बहुत ही आपको अपने आप को हर बार जो है अपने आई को, अपने आंखों को साफ सेफ रखना है। आंखों को खुद नहीं, बाकी सारे वाइटल्स को भी आपका ऊपर जरूरी है। कई जो वाइटल्स जो है आपको प्रोटेक्टिव गियर के साथ आप उसको सेव कर सकता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव गियर है, वियरेबल जो राइट टाइप ठीक तरफ का जो स्पोर्ट्स गियर पहनना, ये भी आपके लिए बहुत ही ये है। और सबसे ज्यादा जैसे आपने डॉक्टर मनोज कुमार साहब ने कंक्लूड किया है वो उससे भी ज्यादा है ये कि आपको जितना वार्म अप किए हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कूल डाउन करना।
वार्म अप तो हर एक तो करते हैं, लेकिन कई बार जो है अपने बच्चे अपने ट्रेनिंग के बाद खुद खत्म करके सीधे चले जाते हैं, कूल डाउन नहीं करते। तो लिम्बर डाउन करना, कूल डाउन करना, इसमें बहुत ही इसमें आपके लिए जरूरी है, हर बच्चे के लिए जरूरी है। तो जितना कूल डाउन का टाइम जो वार्म अप से भी ज्यादा होना चाहिए, और पूरा कूल डाउन करते, स्ट्रेचिंग करते, पूरा ठीक तरह से, जिस तरफ से इसमें आपका अगर परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, तो रिकवर करना, कूल डाउन करना उतना ही आपके लिए, आप हर बच्चे के लिए काफी जरूरी है। तो ये जो हर चीज से जो डॉक्टर मनोज कुमार पटेल साहब ने बताया है, मैं ख्याल में आपको मन में ध्यान देना चाहिए और हर बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि वो साफ रहे। क्योंकि ये मैं खुद बताते हैं, क्यों मैं भी एक बार इसका शिकार हुआ था। मैंने 2006 में जब मैंने खुद रॉक क्लाइंबिंग किए थे, तो मैंने वो रोप का ऊपर से 30 फीट से मैं तो गिर गया था, पूरा नीचे गिर गया और मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया। तो बहुत मुश्किल से मैं बच गया था, मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो फॉल्टी इक्विपमेंट, वो जो रोप जो था पटियाला एनआईएस में था, वो तो बिल्कुल वीक था। उसका ऊपर पहुंचते हुए वो स्नैप हो गया और मैं 30 फीट से नीचे गिर और स्पाइन फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने बहुत मुश्किल से बच गया, लेकिन मैं तो ये जानते हैं कि तो इसको कितना इनका ये जो इंजुरी का, और मैं तो अवॉइड कर सकता था अगर मैं उसको एक बार चेक कर लेते, वो जो रोप को पहले से, या पूछताछ कर लेते, पता कर लेते ये ठीक है कि नहीं। तो अगर आपका बच्चा कोई इक्विपमेंट यूज करते हो, या जिम्नास्टिक्स में हो और कोई इक्विपमेंट यूज करते हो, आप एक बार उसको पूरा चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि वो इक्विपमेंट सही है कि नहीं। और कई बार जो है हमारा कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो ठीक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आपके लिए ध्यान देना चाहिए। ये जो टॉपिक आपने जो मनोज कुमार पटेल साहब ने दिया है, वो बिल्कुल बहुत ही आपको ध्यान देना चाहिए। ये लाइफ सेविंग भी है कई बार, ये सिर्फ खेल के लिए नहीं है। और आपका कई बार जो कई बच्चों का आपको उनका लाइफ भी आप उनको प्रोटेक्ट सेव कर सकता है, अगर ये लागू हो जाते हैं और बता देते, तो कई तरफ का खड़ना से, बीमारियों से, दुर्घटना से बचाने के लिए बच्चों को ये चीज सिखाना, बताना काफी जरूरी है। इतना मैं कंक्लूड करता हूँ। थोड़ा आपका मनोरंजन के लिए एक छोटा वीडियो में प्ले करना का, विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर मनोज कुमार पटेल, a small video I would like to play to make you aware of how it is important, and just watch for a while. I wouldn't go out on the field without properly warming up. You need at least like 10 minutes to get your heart rate up, get your blood flowing, get everything warmed up. It's important to stretch, to exercise, to do those preventive work so you don't get injured. So once you get injured, it's really hard to come back on the field. As an athletic trainer, we want to make sure all of our athletes are ready for the game. So this requires having a good warm-up. I work very closely with our performance coach to make sure that everything goes according to plan when it comes to preventing injury. That can include mobility work, making sure the blood flow is necessary, any good recovery that you've done the night before, getting the body prepped to the movements that will be part of the sport that you play. So that is a छोटा एक वीडियो है। तो इसमें से आपको कि हर एक जो है ये वार्म अप और कूल डाउन में श्रद्धा और ध्यान देना जरूरी है। Once again, thank you so much, Dr. Manoj Kumar Patel sir, for the very informative and highly educative session. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Thank you so much, sir, for your kind words, and definitely I'm sure this will motivate our participants to remain physically fit and do something more for their own health. Now, I take this as a proud privilege to thank Dr. Manoj Kumar Patel, sir. Sir, on behalf of Sports Authority of India, Khelo India, and Lakshmi National College of Physical Education, and on my personal behalf, I thank you for being here with us and uplifting our knowledge in the area of sports science to the next level. Thank you indeed. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Kishore, sir. And thank you, Dr. Astos. Thank you, sir. Thank you so much. And now, participants, there is a poll on your screen. You can respond to it, on the basis of which your attendance will be marked.
Thank you, everyone. Have a nice day ahead. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Saru, I can leave now, right? Yes, sir. Yes, sir. No issues. Thank you. Thank I'll you. end the meeting after the poll is ended. Okay. So, sir, Manu sir also may leave now, right? Yes, yes, yes. Of course, sir. Of course. Okay. Okay.